So let's directly jump onto this कि उस पे कुछ discussion है. नहीं, आई थिंक प्रोग्रेस वाज गुड yesterday. Amazing, एक fantastic. डाउट था मुझे. हाँ, आई couldn't I didn't have enough time to get yeah. into it, so हम्म, maybe you can clarify it already. Was जब तुम बैक प्रोपगेशन कर रहे हो, हम्म. the only thing that is changing is the pixels, correct? The image का pixel, yes. Or Target image. yes, target image pixels. Are the weights of this क्या बोलते हैं, you have weights of every layer, right? WI जो डिफाइन किया था वो कैसे चेंज होते हैं? वो ऑलरेडी सेट है क्या? इट्स अ प्री ट्रेन्ड, फुल्ली प्री ट्रेन्ड Correct, नेटवर्क. So correct. It's a train network. and and alpha and beta, are they also changing? In this case, no. In this case, no. राइट, ठीक तो ये जो कंटेंट वेट है और स्टाइल वेट है, है. जो 1:10⁶ इतने बड़े रेशियो में रखा है उसने, क्योंकि वो बोला कि प्रैक्टिकली हमने देखा, क्योंकि इस ये स्टाइल के लॉस फंक्शन से एसोसिएटेड कोएफिशिएंट है, ये कंटेंट रिप्रेजेंटेशन के लॉस फंक्शन से एसोसिएटेड कोएफिशिएंट है, तो उसका कहना है कि स्टाइल का कोएफिशिएंट थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा है. तो दैट्स अ प्रैक्टिकल कंसर्न. बट दिस, इफ़ यू सी, आई डोंट थिंक कि इसका इक्वल टू कहीं और है. राइट, इसका इक्वल टू यहीं है, और ना ही ये किसी फंक्शन में पास किया गया है कि वो फंक्शन एज अ ब्लैक बॉक्स उसको चेंज करता होगा. तो इफ यू सी, दिस हाँ. इज लाइक कांस्टेंट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, इफ यू वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, यू कैन ट्राई चेंजिंग एंड सी टू योर डिजायर्ड इफेक्ट, जो तुम्हें हाँ. इमेज चाहिए, तो हाँ. वो अलग बात है. बट एक बार सेट हुआ तो वो हिला नहीं रहा है उसको. गॉट इट. राइट, और इनफैक्ट ये नहीं भी होता, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 1:1, तो भी वो कुछ ना कुछ इफेक्ट तैयार करता. बट उस केस में मेरे ख्याल से वो फिर स्टाइल लॉस में इतना बड़ा उसने लिया है, और ये मैंने 1 रखा होता, तो वो कंटेंट ही कंटेंट दिखने लगता, स्टाइल बहुत ही कम दिखता. गॉट इट. But ideally, I think what they've done, and this whole thing would only work with VGG 19, because the whole Did paper, we yeah. can we take a look at VGG19 itself, like how it was trained and all that? Uh, Like not how, here, maybe हाँ, but Gemini को पूछ के देख सकते हैं. नहीं, but what you can certainly do right now is, what it is you can definitely see. If I just print model, it will show me the architecture of that model. Let me just run this first. Right. ये चल नहीं रहा है क्या? हाँ. तो वो 36 जो उसके ये थे, So if, yeah, लेयर प्लस हाँ, पूल्स, ये वो वो दिखता अभी है, राइट? डाउनलोड कर रहा है. वैसे ये देखा, इसने उसने वैसे भी तो किया तो है ही यहाँ पे. हाँ. मैंने अभी पहली बार, कल मैंने इस पे चलाया नहीं था, तो वो अभी डाउनलोड कर रहा है, बट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड ये था. उसमें यू कैन सी उसका आर्किटेक्चर क्या है, कि कॉन्वोल्यूशनल ब्ला ब्ला, कॉन्वोल्यूशनल ये, फिर रेलू, फिर कॉन्वोल्यूशनल, तो उसका आर्किटेक्चर ये है. I'd love to know the history behind this. Like, why was this designed like this? And वो कौन थे महादिग्गज जिन्होंने. तो वो एक लेसन में उसने सब बताया था ना इसमें, कल भी नहीं, कल के पहले, ये वाले में. आई विल गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री, नॉट इन डिटेल ऑफ व्हाट एवरीवन इज डूइंग, बट कौन सा था. स्पेसिफिकली फॉर VGG19. हाँ, ये ग्राउंड ब्रेकिंग बता सी एन एन दीजिए. आर्किटेक्चर्स में VGG 19 उसने बात की कि 16 और 9 रेजनेट की बात की थी. ImageNet is a database of over 10 million hand labeled images drawn from 1,000 different image categories. Since 2010, the ImageNet project has held the ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition, an annual competition where teams try to build the best CNN for object. एक ही इसके बाद देखना, मैं यहाँ पे जस्ट डू VGG है ना उसका नाम, मैं सिर्फ VGG करने से भी हाँ सेम ही देता है वो. उसने एक बंदे ने ना कुछ तो, एक मिनट देना मुझे, कि क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग. तो ना ट्रांसफ़र लर्निंग के एक इसमें,
Hello, everyone. Welcome back. So in this network, you'll be using a pre-trained network to solve this challenging problem of creating a classifier for your cat and dog images. These pre-trained networks were trained on ImageNet, which is a massive data set of over 1 million labeled images from 1,000 different categories. These are available from TorchVision in this module, torchvision.models. And so we see इस we पे have तो जाएगा ना, तो तुझे torchvision.models, तो उसमें तुझे पॉपुलर मॉडल्स दिखेंगे. हम्म, कहाँ से है उसका torchvision? Right, these are the, I think इसमें this would be your VGG, and again very deep blah blah blah, but I think उनका ये सब लोग मोस्टली लेकिन उस इमेज नेट प्रॉब्लम पे तो चलाते ही है अल्टीमेटली. दैट इज लाइक देयर ये प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ. Ready? ये नहीं है, अभी हम कहाँ थे, इस पे दिखाता हूँ. have 6 different architectures that we can use. Then here's a nice breakdown of the performance of each of these different models. So AlexNet gives us the top 1 error and the top 5 error. So basically, as you see, there's some of these networks. These numbers because it here, didn't 19, come 11, about overnight. It was there were many models made of different layers. ऑफ कोर्स. This one happened to be. we have the classifier. हाँ, आई मीन ये सब एकेडमिक से ही आते हैं ना, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये वो उनका पीएचडी का यही सब. आई एम श्योर कि उनका काम वही है करना. बट इफ यू सी उसमें ये यहाँ पे डेंस Of these layers. So this is like a convolutional layer, which again, I'm not going to talk about here, but you don't really need to understand it to be able to actually use this thing. There's 2 main parts that we're Sound interested नहीं in. आ So रहा है, firstly, कोई again, this features play part. कर रहे But हैं। then if we साउंड नहीं आ रहा है क्या? आई डोंट नो व्हाट टू डू भाई. हमें रोज ही वो एक गूगल मीट पे जाना है. गूगल मीट का मैंने ये देखा कि एंटरप्राइज एडिशन में है कि गूगल में डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हो तुम यूट्यूब पे. ये नॉर्मल इसमें नहीं होता. और बाकी वो दूसरा कह रहा है कि लूप बैक लगाओ, बट ऑलरेडी मैं ये मशीन लर्निंग का कुछ चला रहा हूँ, तो वो बड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस हिट आएगा लूप बैक करोगे तो. जैसे अपने वीडियो का लूप बैक किया ना इसमें, तो वैसे ऑडियो करने के लिए वो एक और सॉफ्टवेयर बोल रहा था मुझे डाउनलोड करने के लिए. तो यहाँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूँ, बट ये ऑनलाइन तो दिखता है और सुनता है. हाँ. Like yesterday when you were saying, this, like Shama was saying, I can't hear. या I could hear on the live stream. ओके. हाँ, नहीं लाइव स्ट्रीम पे दिखता है ना. हाँ, क्योंकि वो मैं पूरा लाइव स्ट्रीम पे तो मेरा स्क्रीन ही शेयर है डिस्प्ले कैप्चर की वजह से, तो वो वहाँ से वहीं से इनपुट लेके कहीं से जा रहा है. यहाँ पे वो डिस्प्ले कैप्चर मतलब मेरे कंप्यूटर का साउंड गूगल मीट में नहीं आ रहा है. पहले दिन जब आ रहा था, क्योंकि मैंने गूगल मीट में स्पेसिफिकली वो विंडो शेयर किया था और उसको जो सेंड ऑडियो करके था वो ऑप्शन क्लिक किया था वहाँ पे, इसलिए वो सब वहाँ से चला था. अभी वो वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने पूरा का पूरा OBS का स्क्रीन शेयर किया हुआ है इसके साथ. और इसलिए वो आवाज़ मेरे स्पीकर से उठा के दे रहा है, इसलिए वो स्पीकर से आवाज़ आ रहा है. तो इनफैक्ट मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ, मेरा माइक्रोफोन जब वीडियो चल रहा होगा तो थोड़ा स्पीकर के पास रख सकता हूँ, जो मेरे मुंह के सामने उतना ही. we scroll all the way to the bottom, we also see this classifier part. So we see here is that we have the classifier. इसका खैर मैं पॉइंट ये था. अभी आ रहा था क्या? नहीं, मतलब करके सुनिए. या तो फिर अपने को दूसरे किसी में ये करना पड़ेगा, या फिर स्ट्रीमिंग को ये करना पड़ेगा, क्या आहुति देनी पड़ेगी, या फिर मेरे सेटअप का प्रॉब्लम हो सकता है. बट तुम लोग को वो फिर वापस कोड वोड बाकी वो सेटअप करना पड़ेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, let's move ahead. So it was just academic interest. Maybe you can do it offline. ये कैसे बना था? या तो वो या अगेन कि वो 10 चीज़ें फिर देखनी पड़ेगी, वो हर एक पेपर का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि इसको देख के फिर उसको लगा ऐसे क्यों लगा कि दूसरे को ऐसा करना चाहिए. दैट विल गो वेरी डीप. ऑल राइट, सो लेट्स जंप बैक इनटू
today's lesson which is recurrent RNNs. बट आवाज़ नहीं आ रहा है, बोल रहा है तू? अभी तक तो कुछ नहीं है. Are you playing something? नहीं नहीं, अभी प्ले नहीं किया. मैं बोल रहा हूँ कि अब तक वैसे भी ये नहीं आ रहा था ना. Okay, so let's say we have a regular neural network which recognizes images, and we feed it this image, and the neural network guesses that the image is most No. likely a dog. नहीं. But it's okay. I mean, the text is visible, so I can Yeah, read. yeah. With a small chance of being a wolf and an even smaller chance of being a goldfish. But what if this image is actually a wolf? How would the neural network know? So let's say we're watching a TV show about nature and the previous image before the wolf was a bear and the previous one was a fox. So in this case, we want to use this information to hint to us that the last image is a wolf and not a dog. So what we do is analyze each image with the same copy of the neural network, but we use the output of the neural network as a part of the input of the next one, and that will actually improve our results. Mathematically, this is simple. We just combine the vectors in a linear function, which will then be squished with an activation function, which could be sigmoid or hyperbolic tan. This way, we can use the previous information and the final neural network will know that the show is about wild animals in the forest and actually use this information to correctly predict that the image is of a wolf and not a dog. And this is basically how recurrent neural networks work. However, this has some drawbacks. Let's say the bear appeared a while ago and the two recent images are a tree and a squirrel. Based on those two, we don't really know if the new image is a dog or a wolf, since trees and squirrels are just as associated to domestic animals as they are with forest animals. So the information about being in the forest comes all the way back from the bear. But as we've already experienced, information coming in gets repeatedly squished by sigmoid functions, and even worse than that, training a network using backpropagation all the way back will lead to problems such as the vanishing gradient problem, etc. So by this point, pretty much all the bear information has been lost. That's a problem with recurrent neural networks, that the memory that is stored is normally short-term memory. RNNs have a hard time storing long-term memory, and this is where LSTMs, or long short-term memory networks, will come to the rescue. So as a small summary, an RNN works as follows. Memory comes in and merges with a current event, and the output comes out as a prediction of what the input is, and also as part of the input for the next iteration of the neural network. And in a similar way, an LSTM works as follows. It keeps track not just of memory, but of long-term memory, which comes in and comes out, and also short-term memory, which also comes in and comes out. And in every stage, the long and short-term memory in the event get merged, and from there, we get a new long-term memory, short-term memory, and a prediction. In here, we protect old information more. If we deem it necessary, the network can remember things from long time ago. So in the next few videos, I will show you the architecture of LSTMs and how they work. You think एक बार अपने को vanishing gradient वाला देखना चाहिए? I just saw later on कि we skip because हमने MLP से सीखा नहीं था ना. We had touched upon vanishing gradient. I mean वो CNN में Not specifically, not with RNN, but basically we had at least explored the concept that as networks get deeper, they tend to lose memory of the earlier layers. Yeah, why is that? Like Because these are when you're just doing numbers that you have backpropagation- learned at that layer, na? So why are you losing numbers? What does that mean? कि I'm losing gradients as we go deep. Because when you're doing backpropagation, you are adjusting the weights coming back, right? So the later layers have more weightage than earlier layers for certain things. I don't know how to explain it. No, but back propagation is all about derivation and chain rules, ना? So Correct. basically यहाँ पे A, B, C weight है, यहाँ पे P, Q, R है, यहाँ पे X, Y, Z और final output है. Output तुम्हारा target output की तरह नहीं मिला, loss function से तुम्हें पता चला. इसलिए तुम बता रहे हो कि ये A, B, C, X, Y, Z और P, Q, R को मैं change करूँगा. वो कैसे चेंज करूंगा? तो मैं पूछता हूँ कि ये जो लॉस फंक्शन है, जो डिफरेंस है करेक्ट आउटपुट और मेरे प्रेडिक्टेड आउटपुट में भी जो डिफरेंस है, वो कितना बदलेगा अगर मैं थोड़ा सा dx चेंज करूंगा. और वो dx क्योंकि dp पे डिपेंड करता है, तो dx पहले कितना चेंज होगा अगर मैं थोड़ा सा dp चेंज करूंगा.
डीपी क्योंकि डीए पे डिपेंडेंट है, मैं बोलता हूँ डीपी कितना चेंज होगा तो डीए पे कर लेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा नच करता हूँ ए को, तो पी कितना नच हुआ है तो क्यू कितना नच हुआ, तो आउटपुट थोड़ा सा नच हुआ, क्या अब बेहतर हुआ? ये जो डिफरेंशिएट करके जो मैं थोड़ा जो राइट डायरेक्शन में पुश करना चाह रहा हूँ, दैट्स ऑल बैक प्रोपगेशन इज एट एवरी लेयर, एंड एट एवरी लेयर बिकॉज वन लेयर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रायर लेयर, दैट्स हाउ यू कनेक्ट इट वाया चेन रूल, right? So when I do something on this, it is naturally dependent on this, क्योंकि ये इसका जो फंक्शन है वो W, इसके W से ही तो आया था, और फिर मैं एक्टिवेशन फंक्शन से इसके एक्टिवेशन बने थे, तो इसलिए इसका भी चेन रूल से पहले इसको भी करना पड़ता है, फिर इसको भी करना पड़ता है, तो लॉस कहाँ हो रहा है? इट्स अ सिंपल चेन रूल ना, तो वो लॉस हो रहा है मतलब इसमें जो चेंज होना है आउटपुट में, नया आउटपुट टारगेट के ज़्यादा करीब हो लॉस फंक्शन से मैंने जो निकाला, वो तो मैं पूरे लेयर भर लेयर डेरिवेशन से प्रोपेगेट करते ही जाना है, दे आर जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ नंबर्स एट एवरी लेयर ना। आई डिड नॉट गेट व्हाट अ वैनिशिंग ग्रेडियंट इज, आई मीन थियोरेटिकली वो बोल रहा है, वो समझ गया कि डीप जितना लेयर होगा फिर यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा मैथमेटिकली मैं नहीं समझा। एक बार जेमिनाई से पूछ के देख लेते हैं। हाँ, उसके जगह पे मैं ये बोला, उसका एक स्पेसिफिकली लेसन ही है वैनिशिंग ग्रेडियंट, एक बार उस पे गो थ्रू करे क्या, कितना मिनट का देख लेता हूँ मैं पहले, Here's another वो क्या ही समझेगा, आई डोंट नो कि इसके पहले का वही problem that can occur. ठीक है, नहीं तो मैं एक बार Let's take a look at the sigmoid function. The curve gets pretty flat on the sides. So if we calculate the derivative at a point way at the right or way at the left, this derivative is almost zero. This is not good, since the derivative is what tells us in what direction to move. This gets even worse in multilinear perceptron. Check this out. Recall that the derivative of the error function with respect to a weight was the product of all the derivatives calculated at the nodes in the corresponding path to the output. All these derivatives are derivatives as a sigmoid function, so they're small. And the product of a bunch of small numbers is tiny. This makes the training difficult because basically grading descent just gives us very, very tiny changes to make on the weights, which means we make very tiny steps and we'll never be able to descend Mount Everest. So how do we fix it? Well, there are some ways. Are you saying कि वो प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिग्मॉइड फंक्शन डाला था, जिसकी वजह से वो और कम होता जा रहा है, और इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मतलब हाफ फिर 1/4 फिर 1/8 1/16 ऐसे होते जा रहा है और रियल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ऐसा शायद। The steps they end up taking are very, very small. एक ही लास्ट एक कहीं जाते ही नहीं। आंसर क्या है इसमें तो रेलवे The best way to fix this is to change the activation function. Here's another one. The hyperbolic tangent is given by this formula underneath. E to the x minus e to the minus x divided by e to the x plus e to the minus x. This one is similar to sigmoid, but since the range is between -1 and 1, the derivatives are larger. This small difference actually led to great advances in neural networks, believe it or not. Another very popular activation function is the rectified linear unit, or ReLU. This is a very simple function. It only says, if you're positive, I'll return the same value, and if you're negative, I'll return 0. Another way of seeing it is as the maximum between x and 0. This function is used a lot instead of the sigmoid, and it can improve the training significantly without sacrificing much accuracy, since the derivative is 1 if the number is positive. It's fascinating that this function, which barely breaks linearity, can lead to such complex nonlinear solutions. So now, with better activation functions, when we multiply derivatives to obtain the derivative at any certain weight, the products will be made of slightly larger numbers, which will make the derivative less small and will allow us to do gradient descent. We'll represent the ReLU unit by the drawing of its function. Here's an example of a multilayer perceptron with a bunch of ReLU activation units. Note that the last unit is a sigmoid, since our final output still needs to be a probability between 0 and 1. However, if we let the final unit be a ReLU, we can actually end up with regression models that predict the value. ठीक है, इस पे चले क्या बेसिक एलएसटीएम की आरएनएन से कुछ टिप्पणी जनरली। तो I think I missed out on
how this is like you have 4 different networks here and you are नो इट्स नॉट doing वेरी this. क्लियर, बहुत हैंड वेवी एक्सप्लेनेशन था वो। आई एम अज्यूमिंग कि वो जैसे आर्किटेक्ट इतना ही समझा कि इसका डिफरेंस इतना ही है बाकी इसमें कि पास्ट के लेयर से तुम आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू गेट टू लर्न फ्रॉम आई डोंट This नो is just प्रीवियस layers यूजर्स of और an या RNN, या or these एग्जैक्टली are each different networks. आई डोंट नो Huh. वही I वो think that जी early part of the video maybe suggested something, but I kind of missed. Okay, so let's say we have a regular neural network which recognizes images, and we feed it this image. And the neural network guesses See, we that the fitted image this image. क्या एक मिनट recognizes images, and we feed it this image. Okay, so let's say we have a regular neural network which recognizes images, and we feed it this image. And the neural network guesses that the image is most likely a dog, with a small chance of being a wolf and an even smaller chance of being a goldfish. But what if this image is actually a wolf? How would the neural network know? So let's say we're watching a TV show about nature, and the previous image before the wolf was a bear, and the previous one was a fox. So in this case, we want to use this information to hint to us that the last image is a wolf and not a dog. So what we do is analyze each image with the same copy of the neural network, but we use the output of the neural network as a part of the input of the next one. And that will actually improve our results. Mathematically, this is simple. We just combine the vectors. this looks like these are two different networks, Yeah. राइट मैं इस नेटवर्क ने एक प्रेडिक्ट किया बस, और वो इसको इनपुट की तरह जाता है, और मे बी एक नया इमेज भी इनपुट की तरह जाता होगा, बट देन यू हैव अ इनपुट एज वेल एज अ प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट एज एन इनपुट, मे बी टू इनपुट्स को देखना पड़ेगा आई थिंक। It could be the same network. It has detected a bear. बेसिकली एक नेटवर्क में तुमने 15 एनिमल ट्रेन किए हैं विच इंक्लूड्स वुल्फ एंड डॉग, बट इफ it has seen a fox and a bear and a tree, then you kind of say, oh, this must be a wolf. So probability of wolf given p bear high is high. I don't know if it is different networks or the same network, but yeah, broadly speaking, context awareness is being built. We just start illustrating how RNN work by using a series of images as input. It describes how RNNs use the output of one neural network as part of the input, मैं ये कह रहा था, राइट, बिकॉज नेक्स्ट RNN के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट एक पार्ट है, दूसरा एक इमेज इटसेल्फ एक दूसरा इनपुट हो सकता है। RNN can incorporate previous information to improve prediction. However, RNN struggle with long-term memory due to issues like the vanishing gradient problem, which can lead to the loss of important LSTM solution. LSTM designed to retain both short-term and long-term, allowing them to remember important information. The video highlights the importance of LSTM in handling blah blah blah. So let's recap. We have the following problem. We're watching a TV show, and we have a long-term memory, which is that the show is about nature and science, and the lots of forest animals have appeared. We also have a short-term memory, which is what we have recently seen, which is squirrels and trees. And we have a current event, which is what we just saw, the image of a dog, which could also be a wolf. And we want these three things to combine to form a prediction of what our image is. In this case, the long-term memory, which says that the show is about forest animals, will give us a hint that the picture is of a wolf and not a dog. We also want the three pieces of information, long-term memory, short-term memory, and the event, to help us update the long-term memory. So let's say we keep the fact that the show is about nature and we forget that it's about science. And we also remember that the show is about forest animals and trees, since we recently saw a tree. So we add a bit and remove a bit to the long-term memory. And finally, we also want to use these three pieces of information to help us update the short-term memory. So let's say in our short-term memory, we want to forget that the show has trees and remember that it has wolves, since the trees happened a few images ago and we just saw a wolf. So basically, we have an architecture like this, and we'll use even more animals to represent our stages of memory. The long-term memory is represented by an elephant, since elephants have long-term memory.
The short-term memory will be represented by a forgetful fish, and the event will still be represented by the wolf we just saw. So the LSTM works as follows. The three pieces of information go inside the node, and then some math happens, and then the new pieces of information get updated and come out. There's the long-term memory, the short-term memory, and the prediction of the event. More specifically, the architecture of the LSTM contains a few gates. It contains a forget gate, a learn gate, a remember gate, and a use gate. And here's basically how they work. So the long-term memory goes through the forget gate, where it forgets everything that it doesn't consider useful. The short-term memory and the event are joined together in the learn gate, containing the information that we've recently learned, and it removes any unnecessary information. Now the long-term memory that we haven't forgotten yet, plus the new information that we've learned, get joined together in the remember gate. This gate puts these two together, and since it's called remember gate, what it does is it outputs an updated long-term memory. So this is what we'll remember for the future. And finally, the use gate is the one that decides what information we use from what we previously know plus what we just learned to make a prediction. So it also takes as inputs the long-term memory and the new information, joins them, and decides what to output. The output becomes both the prediction and the new short-term memory. And so the big unfolded picture that we have is as follows. We have the long-term memory and the short-term memory coming in, which we call LTM and STM. And then an event and an output are coming in and out of the LSTM, and then this passes to the next node, and so on and so forth. So in general, at time t, we label everything with an underscore t. As we can see, information passes from time t minus 1 to time t. T minus 1 to time t. So let's recap. We have the following. As we can see, ठीक है, अभी भी थोड़ा ये क्लियर नहीं है कि ये अलग नेटवर्क है कि लेयर्स है, बट मोस्ट लाइकली नेटवर्क है अलग से. ठीक है, एनीथिंग टू बी डिस्कस्ड हियर और My only thing is like the forget gate. What does it decide to forget? I think in the simplest, again, will become clear probably. In the simplistic forget gate could be, जैसे मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये रखता हूँ कि मैं पिछले 15 इमेजेस रखूँगा, तो 15 इमेजेस का मेरा विंडो है, तो फॉरगेट में भी वो एक विंडो स्लाइड किया तुमने और 15 भी फॉरगेट हो गई. तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे. आई गेस देयर गेट मे मोर ट्रिकियर एंड दिस थिंग. ज्यादा लॉजिकल बिजनेस ले. Makes sense. So in order to study the architecture of an LSTM, let's quickly recall the architecture of an RNN. Basically what we do is we take our event ET and our memory MT minus 1. इसका वो on कर देना captions. So in order to study the architecture of an LSTM, let's quickly recall the architecture of an RNN. Basically what we do is we take our event ET and our memory MT minus 1, coming from the previous point in time, and we apply a simple tanh or sigmoid activation function to obtain the output and a new memory MT. So to be more specific, we join these two vectors and multiply them by a matrix W and add a bias B, and then squish this with the tanh function, and that gives us the output MT. This output is a prediction and also the memory that we carry to the next node. The LSTM architecture is very similar except with a lot more nodes inside and with 2 inputs and outputs, since it keeps track of the long and short-term memories. And as I said, the short-term memory is again the output or prediction. Don't get scared. These are actually not as complicated as they look. We'll break them down in the next few videos. Of an LSTM, let's quickly recall the architecture of event ET minus 1. बेसिक वाले को तो RNN आर्किटेक्चर कहता है, which is just short term, and RNN short term plus long term को LSTM आर्किटेक्चर कहता है. ठीक है, you want to take guesses what this is doing? ये तो STM-1 था. previous event जो हुआ था, प्रीवियस इवेंट नहीं, प्रीवियस आउटपुट जो था वो, जो कि
शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रिजर्व था प्लस अभी का हम्म। इवेंट, इनको मिला के ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वो क्या, सिग्मॉइड। ये सिग्मॉइड है। और वो 10H में वगैरह डाल रहा था, वो कैसे यहाँ से 10H में क्या कर रहा था वो? 10H में डाला था ना यहाँ। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था उसने इवेंट का, और ये यूजिंग वेट्स, उनके वेट्स का मल्टीप्लिकेशन किया और फिर बायस को ऐड किया, उसको 10H में डाला, वो नया मेमोरी बना था। तो देयर इज अ 10H का ऑपरेशन। सिग्मॉइड कहाँ है? सिग्मॉइड है कि 10H है? वो क्या डिनोटिव फंक्शन के ये लिए? 10H है, ये क्या था फिर? सिग्मॉइड अलग है। वही सिग्मॉइड है आई थिंक, राइट? यू स्टिल हैव अ सिग्मॉइड एंड 10H? ठीक है, वो मतलब शायद बताएगा, वो इतना स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं, I guess. हाँ। So let's keep this as our base case. We have a long-term memory, which is that the show we're watching is about nature and science. We also have a short-term memory, which is what we've recently seen, a squirrel and a tree. And finally, we have our current event, which is the picture we just saw. That looks like a dog, but it could also be a wolf. So let's study the learn gate. What the learn gate does is the following. It takes the short-term memory and the event, and it joins them. Actually, it does a bit more. It takes the short-term memory and the event, and it combines them. And then it ignores a bit of it, keeping the important part of it. So here, it forgets the fact that there's a tree, and it remembers how we recently saw a squirrel and a dog/wolf. And how does this work mathematically? Well, it works like this. We have the short-term memory stmt-1 and the event et, and it combines them by putting them through a linear function which consists of joining the vectors, multiplying by a matrix, adding a bias, and finally squishing the result with a tanh activation function. Then the new information nt has this form over here. Now, how do we ignore part of it? Well, by multiplying by an ignore factor, it. The ignore factor it is actually a vector, but it multiplies element-wise. And how do we calculate it? Well, we use our previous information of the short-term memory and the event. So again, we create a small neural network whose inputs are the short-term memory and the event. We'll pass them through a small linear function with a new matrix and a new bias, and squish them with the sigmoid function to keep it between 0 and 1. So that's it. That's how the learn gate works. तो वो सिग्मॉइड प्रीवियस इसको इग्नोर करने के लिए था ऐसा। Let's run this one more time. We've recently seen. So let's study the learn gate. What the learn gate does, memory and the event, and it joins them. Actually, it does a bit more. It takes the short-term memory and the event, and it combines them. And then it ignores a bit of it, keeping the important part of it. So here, it forgets the fact that there's a tree, and it remembers how we recently saw a squirrel and a dog/wolf. And how does this work mathematically? Well, it works like this. We have the short-term memory stmt-1 and the event et, and it combines them by putting them through a linear function which consists of joining the vectors, multiplying by a matrix, adding a bias, and finally squishing the result with a tanh activation function. Then the new information nt has this form over here. Now, how do we ignore part of it? Well, by multiplying by an ignore factor, it. The ignore factor it is actually a vector, but it multiplies element-wise. And how do we calculate it? Well, we use our previous information of the short-term memory and the event. So again, we create a small neural network whose inputs are the short-term memory and the event. We'll pass them through a small linear function with a new matrix and a new bias, and squish them with the sigmoid function to keep it between 0 and 1. So that's it. That's how the learn gate works. So the only difference between ignore vector and इसका क्या नाम था, null vector, क्या नाम था इसका, NT, the only difference is the activation function. Yeah. What's the I? Hmm? ये I है, यहाँ N है, ये क्या है? I और N क्या डिनोट कर रहा है? जस्ट इग्नोर के केस में या N के केस में इसलिए वो है, बट सेम ही है अगर और 10H और सिग्मॉइड वैसे तो क्लासिकली एक ही है, राइट? -1 से 1 तक जाता है और 1 0 से 1 से जाता है, I mean, like
ऐसे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा है ऐसे मैथ्स का ये लग रहा है कि ये करने से इग्नोर हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन, ये ट्री उसने भूल गया वो। आई थिंक उसने ऐसे ऊपर ऊपर से बताया है. वील हैव टू लाइक डिग इन ऑफलाइन एंड सी एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स इफ वी वांट टू. या बट और वी उसके जस्ट अभी टेक अभी इट तक एट के ऑन सारे फेस वैल्यू एंड से कि हाँ ठीक है ऐसा होता है. उसको डिग इन करके देखना है तो तुम देख लो, बट हम नहीं देखेंगे. नहीं, लेकिन अब तक के उसके सारे लेसन सेल्फ सस्टेनिंग थे, ये मुझे थोड़ा अभी तक तो ऐसा लगा, होपफुली आगे जाके वो क्लियर होगा। Now we go to the forget gate. This one works as follows. It takes the long-term memory and it decides what... Now we go to the forget gate. This one works as follows. It takes the long-term memory and it decides what parts to keep and to forget. In this case, the show is about nature and science, and the forget gate decides to forget that the show is about science and keep the fact that it's about nature. And how does the forget gate work mathematically? Very simple. The long-term memory LTM from time t minus 1 comes in, and it gets multiplied by a forget factor ft. And how does the forget factor ft get calculated? Well, simple. We'll use the short-term memory STM and the event information to calculate ft. So just as before, we run a small one-layer neural network with a linear function combined with a sigmoid function to calculate this forget factor. And that's how the forget gate works. ठीक है, सेम थिंग। आई थिंक ये चारों गेटों के मैथमेटिकल इक्वेशन देखने पड़ेंगे क्या हो। And now we're going to learn the remember gate. This one is the simplest. It takes the long-term memory coming out of the forget gate and the short-term memory coming out of the learn gate and simply combines them together. And how does this work mathematically? Multiply. Again, very simple. We just take the outputs coming from the forget gate and from the learn gate, and we just add them. That's it. That's all we do. And that's how the remember gate works. What was the output of It works. forget? And now we're going to learn the remember gate. That's how the remember... The output of the forget gate was something to be forgotten or something to be kept after deleting what was forgotten? Now we go to the forget gate. This one works as follows. Kept after It takes the deleting. long-term memory and it decides what parts to keep and to forget. In this case, the show is about nature and science, and the forget gate decides to forget that the show is about science and keep the fact that it's about nature. Okay. And how does the forget gate work mathematically? ठीक है, let's go to the use gate. And finally, we come to the use gate or output gate. This is the one that uses the long-term memory that just came out of the forget gate and the short-term memory that just came out of the learn gate to come up with a new short-term memory and an output. These are the same thing. In this case, we'll take what's useful from the long-term memory, which is this bear over here, and what's useful from the short-term memory, which is this dog wolf and the squirrel, and that's what's going to be our new short-term memory. So our output basically says your image is most likely a wolf, but it also carries some of the other animals that it's seen recently. And mathematically, what this does is the following. It applies a small neural network on the output of the forget gate using the 10H activation function, and it applies another small neural network on the short-term memory and the events using the sigmoid activation function. And as a final step, it multiplies these two in order to get the new output. The output also works as the new short-term memory. And that's how the use gate works. Last part एक बार just. Using the 10H activation network on the out, applies a small neural network on the output of the following. And mathematically, what this does is the following. It applies a small neural network on the output of the forget gate using the 10H activation function, and it applies another small neural network on the short-term memory and the events using the sigmoid activation function. And as a final step, it multiplies these two in order to get the new output. The output also works as the new short-term memory. And that's how the use gate works. यूज गेट में उसने बोला था लर्न गेट का आउटपुट भी यूज होगा ना, तो उसमें तो कहीं हुआ ही नहीं भाई कुछ। पुटिंग इट ऑल टुगेदर में देखते हैं, लेट्स सी। So here we go. As we've seen before, here is the architecture of an LSTM with the 4 gates.
There is the forget gate, which takes the long-term memory and forgets part of it. The learn gate puts the short-term memory together with the event as the information we've recently learned. The remember gate joins the long-term memory that we haven't yet forgotten, plus the new information we've learned in order to update our long-term memory and output it. And finally, the use gate also takes the information we just learned together with the long-term memory we haven't yet forgotten, and it uses it to make a prediction and update the short-term memory. So this is how it looks all put together. It's not so complicated after all, isn't it? Now you may be thinking, wait a minute, this looks too arbitrary. Why use Lot of 10 each arrows. sometimes? Now it's coming to the point. This looks too arbitrary. Be thinking, wait a minute, this looks too arbitrary. Why use tanh sometimes and sigmoid other times? Why multiply sometimes and add other times and other times apply a more complicated linear function? You can probably think of different architectures that make more sense or that are simpler. And you are absolutely right. This is an arbitrary construction. And as many things in machine learning, the reason why it is like this is because it works. And in the following section, we'll see some other architectures which can be simpler or more complex, and that also do the job. But you're welcome to look for others and experiment. This is an area very much under development, so if you come up with a different architecture and it works, that is wonderful. एक ऐसे फील्ड में हो तुम अर्जुन जहाँ पे बहुत स्कोप है इनोवेशन का. In this video, I will show you a pair of similar architectures that also work well, but there are many variations to LSTMs, and we encourage you to study them further. Here's a simple architecture which also works well. It's called the Gated Recurrent Unit, or GRU for short. It combines the forget and the learn gate into an update gate, and then runs this through a combine gate. It only returns one working memory instead of a pair of long and short-term memories, but it actually seems to work in practice very well too. I won't go much into details, but in the instructor comments, I'll recommend some very good reference to learn more about gated recurrent units. Here's another observation. Let's remember the forget gate. The forget factor ft was calculating using as input a combination of the short-term memory and the event. But what about the long-term memory? It seems like we left it away from the decision. Why does the long-term memory not have a say into which things get remembered or not? Well, let's fix that. Let's also connect the long-term memory into the neural network that calculates the forget factor. Mathematically, this just means the input matrix is larger, since we're also concatenating it with the long-term memory matrix. This is called a peephole connection, since now the long-term memory has more access into the decisions made inside the LSTM. We can do this for every one of the forget type nodes, and this is what we get: an LSTM with peephole connections. Character level RNN. That is, it will learn from some text one character at a time. ये LLMs का grandfather था. Okay, to introduce you to RNNs in PyTorch, I've created a notebook that will show you how to do simple time series prediction with an RNN. Specifically, we'll look at some data and see if we can create an RNN to accurately predict the next data point given a current data point. And this is really easiest to see in an example, so let's get started. I'm importing our usual resources, and then I'm actually going to create some simple input and target training data. A classic example is to use a sine wave as input because it has enough variance in shape to be an interesting task, but it's also very predictable. So I want to create a sample input and target sequence of data points of length 20, which I specify here as sequence length. Recall that RNNs are meant to work with sequential data, and so this sequence length is just the length of a sequence that it will look at as input. Often the sequence length will indicate the number of words in a sentence, or just some length of numerical data, as is the case here. So in these two lines, I'm just going to generate the start of a sine wave in a range from 0 to pi time steps. And at first, I'm going to create a number of points that's sequence length 20 plus 1. Then I'm going to reshape my sine wave data to give it one extra dimension, the input size, which is just going to be 1. Then to create an input and target sequence of the length I want, I'm going to say an input x is equal to all but the last point in data,
and the target y is equal to all but the first point. So x and y should contain 20 data points and have an input size of 1. Finally, I'm going to display this data using the same x-axis. You can see the input x is in red, and the target y is shifted over by 1 in blue. So if we look at this point as an example, at the same time step, y is basically x shifted 1 time step in the future. And that's exactly what we want. So now we have our training data, and the next step is defining an RNN to learn from this data. We can define an RNN as usual, which is to say as a class using PyTorch's NN library. The syntax will look similar to how we've defined CNNs in the past. Let's actually click on the RNN documentation to read about the parameters that a recurrent layer takes in as input. Okay, so here's the documentation for an RNN layer. We can see that this layer is responsible for calculating a hidden state based on its inputs. Now to define a layer like this, we have these parameters: an input size, a hidden size, a number of layers, and a few other arguments. The input size is just the number of input features. And in our specific case, we're going to have inputs that are 20 values in sequence and 1 in input size features. This is sort of like when we thought about the depth of an input image when we made CNNs. Next, we have a hidden size that defines how many features the output of an RNN will have and its hidden state. We also have a number of layers, which if it's greater than 1, just means we're going to stack 2 RNNs on top of each other. Lastly, I want you to pay attention to this batch first parameter. If it's true, that means the input and output tensors that we provide are going to have the batch size as the first dimension, which in most cases that we go through will be true. Okay, so this is how you define an RNN layer, and later in the forward function, we'll see that it takes in an input and an initial hidden state, and it produces an output and a new hidden state. Okay, back to our notebook. Here I'm defining an RNN layer, self.rnn. This RNN is taking in an input size and a hidden dimension that defines how many features the output of this RNN will have. Then it takes in a number of layers, which allows you to create a stacked RNN if you want, and this is typically a value kept between 1 and 3 layers. Finally, I'm setting batch first to true because I'm shaping the input such that the batch size will be the first dimension. Okay, then to complete this model, I have to add one more layer, which is a final fully connected layer. This layer is responsible for producing the number of outputs, output size, that I want, given the output of the RNN. So all of these parameters are just going to be passed into our RNN when we create it. You'll also note that I'm storing the value of our hidden dimension so I can use it later in our forward function. In the forward function, I'm going to specify how a batch of input sequences will pass through this model. Note that this forward takes in an input x and a hidden state. The first thing I'm doing is grabbing the batch size of our input, calling x.size of 0. Then I'm passing my initial input and hidden state into the RNN layer. This produces the RNN output and a new hidden state. Then I'm going to call view on the RNN output to shape it into the size I want. In this case, that's going to be batch size times sequence length rows and the hidden dimension number of columns. This is sort of like a flattening step where I'm preparing the output to be fed into a fully connected layer. So I'll pass this shaped output to the final fully connected layer and return my final output here and my hidden state generated from the RNN. Now, as a last step here, I'm going to actually create some text data and a test RNN and see if it's working as I expect. The most common error I get when programming RNNs is that I've messed up the data dimensions somewhere. So I'm just going to check that they're as I expect. So here I'm just creating a test RNN with an input and output size of 1, a hidden dimension of 10, and a number of layers equal to 2. And you can change the hidden dimension and number of layers. I basically just want to see that this is making the shape of outputs I expect. So here I'm creating some test data that's our sequence length long. I'm converting that data into a tensor data type and unsqueezing the first dimension to give it a batch size of 1 as a first dimension. Then I'm going to print out this input size, and I'll pass it into our test RNN as input. Recall that this takes an initial hidden state, and an initial one here is just going to be none. Then this should return an output and a hidden state, and I'm going to print out those sizes as well. Okay, so our input size is a 3D tensor, which is exactly what I expect. Its first dimension is 1, our batch size, then 20, our sequence length, and finally our input number of features, which is just 1, as we specified here. The output size is a 2D tensor, and this is because in the forward function of our model definition, I actually smooshed the batch size and sequence length into one parameter. So batch size times sequence length is 20, and then we have an output size of 1. Finally, we have our hidden state. Now, the first dimension here is our number of layers that I specified in the model definition, 2. Next, we have the value 1, which is just the batch size of our input here.
And finally, the last dimension here is 10, which is just our hidden dimension. So all of these look pretty good and as I expect, and I can proceed. Next, I'll show you how to train a model like this. ये बहुत ही ज़्यादा ये था मेरे हिसाब से. Dense, very dense. कि एक बार उसका ये निकालता हूँ. किसका रास्ता pi पाई कितना है एन पीरियड पाई का वैल्यू 3.14 है ना. तो 0 से इसमें ठीक है. एक पाई मतलब बेसिकली 180 डिग्री का उसको साइन वेव देखना था और उसके बीच में उसने इक्वी डिस्टेंस 20 पॉइंट्स ले लिए. दोज आर द टाइम स्टेप्स और उसका करस्पॉन्डिंग साइन वैल्यू निकाला y वैल्यू. दिस इज योर x, दिस इज योर y. नाउ शी इज रीसाइजिंग. साइज बिकम्स सेकंड 20 डेटा का वरना साइज क्या था. यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं. वैसे ये दिस इज 1 पहले चलाते हैं. दिस शुड बी अ सिंगल वेक्टर राइट. जो साइन वैल्यू है इसका तो इसका शेप 1,0 होना चाहिए. एक मिनट पहले ये चलाते हैं. फिर मैं इसके बीच में इसको यहाँ पे ये रखता हूँ और ये चीज़ देख लेते हैं अपन. ये उसने किया राइट. ये है 21 ये np line space returns an array. जब मैं कोई एक नंबर x इक्वल टू 20 लिखता हूँ और x का शेप होता है क्या कि उसका शेप नहीं होता. इसका शेप नहीं होता तो स्केलर कैसे मैं ये करता हूँ. how to define a scalar value in tensor and numpy. अच्छा simple as a number और टेंसर में tf डॉट कांस्टेंट वगैरह. ठीक है यही देख लेते हैं. अगर मैं ये किया होता और इसका शेप देखता तो इसका कोई शेप ही नहीं आया भाई. इसका शेप आना चाहिए.
It's defined as a empty shape or a null shape. Multiple. तो बेसिकली मैं दूसरा फिर a इक्वल टू np डॉट जीरोस करके कैसा ऐसा कुछ कहता है कि नहीं होता। इसका शेप कितना होगा 10, राइट, ठीक। तो उसी प्रकार इसका शेप 20 था। 10 comma null, basically 10 constants. Right, so it's an array of 21 numbers. 21 constants, yeah. Right. The reason I'm saying this is because ultimately it will resize that. Resize करने पे उसको एक और साइज मिल जाएगा, which means ये वेक्टर से हटके मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा क्योंकि रीसाइज में इसमें बेसिकली 21 था, अभी भी वो बोल रहा है कि 21 रोज हो और एक कॉलम का हो, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स तो उतने ही रहेंगे, बट अभी मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। So comma. चेंज नहीं हुए, लेआउट चेंज हुआ। Correct. तो उसने उसको मैट्रिक्स बनाया, all but last piece of data and all but first piece of data, which is good. Time steps. तो x वैल्यू इनपुट है, तो लास्ट में इसका डेटा नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू एक उसको शॉर्ट है और इसका पहले नहीं आना चाहिए। मेक सेंस, एंड दैट इज डूइंग डेलिबरेटली बिकॉज वो एक से ऑफसेट चाहती थी टू डू सम प्लॉट। दैट इज जस्ट अ प्लॉट व्हिच इज फाइन। ये हमारा था। नाउ टू द क्रक्स। इसमें वो क्या कर रही है, एक तो ये उसने स्टेट हिडन रखा है, वो बोली कि वो बाद में कहीं यूज करेगी। सेल्फ डॉट ये यहाँ यूज किया है तब देखेंगे, बट मेन चीज ये तो खैर अपना लीनियर लेयर है। आउटपुट साइज वगैरह सब आरएलएल मॉडल के हिसाब से है। इसको एक ही चीज़ आउटपुट करनी है, वैसे एक ही चीज़ इनपुट लेनी है, तो विच इज़ फाइन, राइट। उसने एग्जांपल में वही दिखाया था, 1 इनपुट 1 आउटपुट, सो दैट इज ओके। ये भी साइमल्टेनियसली ओपन करके रखते हैं अपने, कहाँ था वो आरएनएन, यहाँ पे था। The number of expected features in the input, तो अपने फीचर्स 1 थे। So there are 21 inputs, but each input has one feature और वो that's an जनरली भी वैसा ही है, और उसने वैसे इनपुट साइज उसको 1 डिफाइन किया है, बट according to this input is the number of expected features in the input. फिर क्या था, आउटपुट साइज। आउटपुट साइज इज योर, आउटपुट साइज नहीं है क्या, एक्चुअल आरएनएन बनाते हुए वो आउटपुट साइज वैसे अलग से नहीं दिया है, वो आउटपुट साइज लीनियर के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा फाइनल चीज़ नहीं है, इसका तो हिडन लेयर है। हिडन लेयर से ये है, तो ये तुम्हारा जो बाहर का ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैंने आउटपुट दिया है, बट जो तुम लाइब्रेरी का यूज़ करोगे वो आउटपुट साइज नहीं, वो हिडन डिमेंशन पे चलेगा, तो उसने उसको तो नहीं दिया। उसके बाद define an RMM which specified parameters. Batch first means that the first dimension of the input and the output will be the batch size. Batch size, whatever. ये input है, ये hidden dimension है, n layers है, और ये है
hidden size, the number of features in the hidden state H. What's a hidden state? ये अचानक से आया, ऐसा नहीं लग रहा आउट ऑफ सिलेबस? नहीं नहीं, हिडन स्टेट वो आरएनएन में तुम्हारे हिडन लेयर्स है, वही हिडन स्टेट है ना. हिडन स्टेट हो गए. नंबर ऑफ फीचर्स, तो वो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फीचर्स इन द हिडन स्टेट, वो कितने दिए हैं? वो ये है राइट, हिडन डिमेंशंस, वो उसने पास किए हैं 10. ये उसने बोला आर्बिट्ररी नंबर है. तो इज इट लाइक, मैं समझूं कि जैसे अपने लीनियर लेयर में न्यूरॉन थे एक लेयर में, वैसे फिलहाल इन लीव ऑफ एनी अदर बेटर एक्सप्लेनेशन मैं मेरे मेंटल मॉडल में वैसे मान के चलता हूँ. डिमेंशन मतलब लेयर एक ही है हिडन, और उस हिडन लेयर में फीचर्स कितने हैं, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि जैसे लीनियर लेयर में 15 न्यूरॉन्स थे, तो वैसे बराबर. फीचर्स हैं. एन लेयर, दिस माइट बी द नंबर ऑफ लेयर्स राइट, द नंबर ऑफ रिकरेंट लेयर्स. बट हियर इट इज सेइंग कि नंबर ऑफ रिकरेंट लेयर्स, इसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स वगैरह वैसे नहीं बोल रहा है. इसलिए आई एम थोड़ा अनईजी सा लग रहा है मुझे ये अलग से. तो तुम जब एक सिंपल एमएलपी कर रहे हो, तो यू आर डिफाइनिंग ईच लेयर इंडिविजुअली, सेइंग उसमें 10 रखो, इसमें 512 रखो, इसमें 16 रखो. यार इट्स सेइंग तुमने जो इंटरमीडिएट लेयर्स डिफाइन किए हैं, दे आर ऑल बी ऑफ सेम फीचर डेप्थ. सो बेसिकली यू जस्ट डिफाइन द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड कितना डेप्थ है. तो इट्स लाइक 15 लेयर एंड ईच ऑफ डेप्थ 5. तो वो इट्स लाइक कॉन्सेप्चुअली इट इज़ लाइक 5 के 15 लेयर्स. Why it is that, I don't know. You can just experiment basically. So number of layers equal to 2 means taking 2 RNNs together. Hmm. So this is 1 RNN. Correct. तो मतलब इसने इंटरनली वो एक और बनाएगा, मतलब ऐसे वाले ही बनाएगा जिसका इनपुट साइज इसका आउटपुट होगा Same पहले होगा. वाले का. Hmm. हिडन डिमेंशन नहीं होंगे, नंबर ऑफ लेयर्स फिर एक कम करेगा वो नेक्स्ट वाले के लिए और नेक्स्ट वाले के लिए, तो फाइनली जो ये होगा बैच first if true then the input and output tensors are provided as batch sequence, also sequence of sequence batch and feature, just about orientation of how your output is shown. Then अल्टीमेटली फिर ये, हाँ दिस मेक सेंस, क्योंकि वी आर सेइंग कि इसका लेयर्स कितने भी हो, उसका जो न्यूरॉन्स टाइप है जिसको वो हिडन स्टेट कह रहा है, वो इतने डिमेंशन का होगा. तो अल्टीमेटली जब तुम लीनियर मॉडल उसको कनेक्ट करोगे तो उसके इनपुट इतने होंगे, फिर आउटपुट तुम्हारे साइज के हिसाब का होगा. जब मैं एक्चुअली मेरा डेटा पास करूँगा इसमें, टाइप बैच साइज सीक्वेंस और ये है, और इसके केस में टेस्ट आरएनएन में मैंने पास किया है टेस्ट इनपुट किया है. ये स्क्वीज करके अगर देखना पड़ेगा, बट साइज 0 द हिडन सीक्वेंस लेंथ, मतलब मेरे 21 पॉइंट्स थे, उसका डायमेंशन 1 था. बैच साइज, एक बैच में कितने आएंगे वो देखना पड़ेगा, हो सकता है सारे के सारे एक बैच में आए, वो देखते हैं. बट दैट इज़ योर फर्स्ट साइज, सो विच यू टेक अपार्ट एंड देन यू से कि self dot rnn which is my rnn layer network, उसको मैंने कहाँ गया वो, उसको मैंने मेरा x दिया और हिडन दिया. और उससे आउट और हिडन मिला.
क्या इशू आ रहा है? ये कहाँ जा रहा है ये फंक्शन ये तो नहीं है इनपुट साइज में, तो इसको इंटीजर चाहिए ना यहाँ पे। साइज इज एन इंटीजर, राइट? सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये बेसिकली कल कॉल क्या कर रहा है। अच्छा, ये इसका फॉरवर्ड कॉल कर रहा है क्या? कॉल कर रहा है शायद, आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। हाँ, ये कॉल कर रहा है। मैं वही सोच रहा था कि इसने ये कॉल क्या करेगा, ये वाला, क्योंकि ये कॉल ये कॉल नहीं है। This is like you're defining RNN, but after you have created an object of that defined RNN, you are calling that object and calling a function. That function, when you call on a neural net, it basically calls the neural net's forward. This forward is our outer layer, अपने network का forward है, जिसमें हम RNN यूज कर रहे हैं। बट इस केस में हम RNN को ही कॉल कर रहे हैं इंटरनली, तो उसका फॉरवर्ड कॉल होगा, जो कि यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। Now it makes sense. तो वो बेसिकली जो मेरा डेटा आया, जो कि बैच साइज कॉमा सीक्वेंशियल लेंथ कॉमा इनपुट साइज, मैंने उसमें से बैच साइज अलग से रखा, लेकिन वो डेटा और हिडन, नाउ व्हाट वाज हिडन, हिडन वाज पास्ड टू मी, इट वाज पास्ड टू माय आरएनएन, व्हिच मींस इट वाज पास्ड टू, पहली बार उसने बोला कि मैं नन पास करता हूँ, ठीक है। तो वो नन देगा। सो बेसिकली दिस कि उसने क्या कर रहा है, एक्चुअली आरएनएन क्या कर रहा है वो समझना है। तो implementation equivalent to the following with bidirectional equal to false. Apply a multi-layer element RNN with 10 or value or non-linearity. Corresponding to the following variables are defined whole RNN parameter number of layers. If batch first जो हमारे केस में है, this pass handle batch first parameter connection, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसको वो तो कुछ ट्रांसपोज वगैरह करेगा एक डायमेंशन पे, तो ये उल्टा हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन size and then batch size on the input tensor and ये हमारे केस में नन है। हिडन लेयर, नंबर ऑफ लेयर्स जो हमने 2 डिफाइन किए थे, बैच साइज को देखना पड़ेगा, हो सकता है मैक्सिमम 21 होगा पूरा ही बैच दिया तो। हिडन साइज हमारी थी, राइट, जो हमने आर्बिट्रेरी डिफाइन की थी, उसने अगर नहीं दिया तो उतना बनाया। -1 पहला ही है तो HD भी है और HT-1 भी है। इसमें से कुछ निकला नहीं है, बिकॉज दिस इज द इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। स्टेप इटरेशन, सीक्वेंस लेंथ यहाँ पे यूज किया। सीक्वेंस लेंथ इज जस्ट फॉर रेंज करेगा वो। और लोग लेयर इन ये ना यहाँ पे अपना 2 बार करेगा, हर एक लेयर पे हर एक डेटा पॉइंट, हर एक लेयर में एक एक बार करो। ये वो गणित उसने किया जो उसने दिखा रही थी वो कुछ तो, और यहाँ पे वो शायद वो वाला पार्ट था, राइट, कि यूज स्टेट वाला पार्ट था, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और आउटपुट में भी जाएगा, ऐसा कुछ जो भी था। h_t, h_t
ये था मेरा स्टार्टिंग में एच अंडरस्कोर टी था। अच्छा, जो करंट था वो एक पीछे चला गया, और जो लास्ट मेरा एच टी में था वो पहले मैंने आउटपुट में डाला। नहीं, ये फॉर लूप कहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये पूरा फॉर लूप चलेगा एक बार, है ना। और लूप में दूसरा डेटा पॉइंट लेने से पहले मैं ये करूँगा, ये एक डेटा पॉइंट लिया, एक डेटा पॉइंट लेके मैं उसको सारे लेयर में से निकाला। इनफैक्ट सारे लेयर में से नहीं, मैं लेयर बाय लेयर एच टी की चीज़ रखता हूँ, इट्स डिक्शनरी। और हर लेयर का हिडन स्टेट उस टाइम टी के लिए मैंने कुछ तो रखा, और फिर जैसे ही रखा मैंने बोला कि लास्ट, अच्छा नंबर ऑफ लेयर्स है राइट, तो अपने दो लेयर थे ना, 0 एंड 1, बट आउटपुट में मैंने सिर्फ लास्ट लेयर, -1 इज़ द बेसिकली लास्ट एलिमेंट इन द अरे। तो इस अरे में ज़ीरोथ पोजीशन पे पहले लेयर का एच टी बना था, उसके बाद वो वापस दूसरे पे जाएगा, 1 लेयर पे 1 का आउटपुट जाएगा, बट आउटपुट में वो सिर्फ 1 वाले का आउटपुट डालेगा। और फिर एच टी इज़ दैट, एंड द होल अरे फिर -1 में डालेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ गणित के हिसाब से उसने कुछ किया ऐसा लग रहा है, राइट। The outer loop iterates over each time stamp t in the input sequence from 0, so which is our 0 to 21. The inner number of layers, which is अपने दो layers, दो बार। The RN core calculation, xt gets the input at the current timestamp t, xt at the rate weight blah 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 calculates the contribution of the input to the hidden state. The result bias is hidden state from the previous step, ht -1। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्योंकि मैंने अभी का इसमें रखा, तो अल्टीमेटली वो -1 का मतलब पिछले लेयर का जो भी इसको इन्फॉर्मेशन लेना था, ht -1। सो बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ht, and to determine ht you get informed by content which is there in ht -1, and the way ht -1 gets updated is every time you go through the loop and you put ht का content into ht -1, so the next time जब ht है उसमें वो तुम्हें ये करेगा, right। So calculates the contribution of the previous hidden state, transfer results become this, bias is added, torch here, so I'm just glossing over. After the inner loop, that is after processing all layers, the hidden state of the last layer is appended to the output. This typically what considered the output of the RNN each time step, and at the end of the outer loop, after processing a time step, the current hidden state becomes a previous state, previous output processing. The output list, which contain last layer's hidden states for each time step, is converted into a single tensor, राइट। तो ये ऐसे 20 बार उसमें अपेंड होने चाहिए, और 20 बार क्या 10 के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि वो 10 का लेयर था, 10 10 इंटू 1, और अदर 20 इंटू 10, क्या कितना शेप बनेगा उसका पता नहीं। हिडन साइज तो मेरा 10 था, बैच साइज पता नहीं, सीक्वेंस लेंथ इज 20, सो 20 इंटू, इफ बैच फर्स्ट देन ये आएगा, ओनली डिफरेंस, एंड देन उसको तुम रिटर्न करोगे। सो बेसिकली आउटपुट रिटर्न होगा, वो सारा जो उसने कुछ बताया था वो गणित को देखे आउटपुट, मतलब हर एक डेटा पॉइंट, मतलब वो जो मेरा साइन वेव के 20 पॉइंट्स थे, वो दोनों लेयर में से निकाल के मैं उसका आउटपुट करूँगा, और हिडन स्टेट ये करूँगा। The final hidden state of the RNN after processing data, this is useful for initializing the hidden state of the subsequent layers, subsequent sequence पर थोड़ा फेंटिश ये समझ में आ रहा है, बट लेट्स सी
कि वो मैंने पास किया, तो ये तुम्हारा आउटपुट था और ये तुम्हारा इनपुट था. Let's just run and see. Right. तो इनपुट साइज मेरा कितना था? ये डेटा, ये तो हमने बात की थी, राइट. 0 से लेके पाई तक 20 पॉइंट्स, उसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू वो 21 निकला. बट 21 रो रो वेक्टर की जगह पे मैंने 21x1 का मैट्रिक्स बनाया. और इसको अनस्क्वीज करने का क्या मतलब है? सो बट अनस्क्वीज किया मतलब जो भी किया उससे फिर इसका साइज ऐसे बना, राइट. इसके पहले इसका साइज मैं किसका साइज देख रहा हूँ? अच्छा, ये टेंसर नहीं है इसलिए. तो इसका मैं अगर शेप देखूँ और इसका शेप देखो, तो 20,1 से वो 1 into 20. So unsqueeze basically give you one more dimension, which is I think they want to use it as a batch. बट उसका वैल्यू कितना था? अगर उसका 0 मैं ये करता, ये कौन से वैल्यू से ये क्यों आए? क्या ही है भाई ये? अच्छा, नो, दिस इज जस्ट गिविंग यू 20x1 का वैल्यू. तो बेसिकली आई थिंक they have taken I think it will be clear if I just print ये यहाँ पे जब x dot size dot 0, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, ये करने से पता चल जाएगा. तो मेरे हिसाब से उसने बैच को 1 लिया, राइट. यही तो उसका ये था. ये क्या 0, ये 1 आएगा क्या? ये 1 आया, राइट. ठीक है. तो बेसिकली ऑल दिस एक्सरसाइज वाज टू क्रिएट अ बैच आउट ऑफ दिस 20,1. और वो सारों को उसने एक ही बोला कि एक ही बैच में ये बार 20 को प्रोसेस करो, क्योंकि इसको बैच चाहिए. सो दिस होल एक्सरसाइज वाज फॉर दैट. और वो होने के बाद तुम्हारा टेस्ट इनपुट बना. टेस्ट इनपुट को तुमने आरएनएन को दिया, बोला कि हिडन स्टेट. तो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम अपने हिस्से से बनाओ, जैसे मैंने आर्किटेक्चर डिफाइन किया था उसके हिसाब से तुम इनिशियलाइज करो. और फिर उसने आउटपुट दिया और ये सब किया. और ये तो उसने ये किया. उसके बाद मेरे नेटवर्क ने शेप आउटपुट टू गेट द फाइनल आउटपुट. ठीक है, उसको फिर लीनियर लेयर से मैंने निकाला, क्योंकि ये तो मेरा नेटवर्क है. आर आउट को उससे निकाला, बट आर आउट को वहाँ से निकालने से पहले वापस वो बैच को हटाया, क्योंकि मैंने बैच 1 था जो कि मैंने 1 यहाँ से तैयार किया था. तो 20x1 को 1x20x1 किया था. उसको मैंने वापस वहाँ से वो थर्ड डायमेंशन हटाया, उसको 2 डायमेंशन वाला बनाया और फिर मेरे लीनियर नेटवर्क को दिया और ये किया. ठीक है. पर जो भी ब्रेन था उसका, जो ये कर रहा था, हाई लेवल कोडिंग तो समझ रहा है, बट वही है, उतना ऐसा है ना, कन्विक्शन नहीं आ रहा है जैसा CNN के लिए आ रहा था कि चल क्या रहा है. हाँ, आई थिंक वो हमको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में समझना पड़ेगा, ड्रा वॉ करके, जैसे हमने CNN में किया था. Just complete that training and memory. Last time we defined a model, and next I want to actually instantiate it and train it using our training data.
First, I'll specify my model hyperparameters. The input and output will just be one. Last time, we defined a model, and next I want to actually instantiate it and train it using our training data. First, I'll specify my model hyperparameters. The input and output will just be one. It's just one sequence at a time that we're processing and outputting. Then I'll specify a hidden dimension, which is just the number of features I expect to generate with the RNN layer. I'll set this to 32, but for a small dataset like this, I may even be able to go smaller. And I'll set n layers to 1 for now, so I'm not stacking any RNN layers. I'll create this RNN and print it out. I should see the variables that I expect, my RNN layer with an input size and hidden dimension, and a linear layer with an input number of features and output number. Before training, I'm defining my loss and optimization functions. Now in this case, we're training our model to generate data points that are going to be basically coordinate values. So to compare a predicted and ground truth point like this, we'll use a regression loss because this is just a quantity rather than something like a class probability. So for the loss function, I'm going to use mean squared error loss, which will just measure the distance between 2 points. And I'll use an Adam optimizer, which is standard for recurrent models, passing in my parameters and a learning rate. Next, I have a function train that's going to take in an RNN, a number of steps to train for, and a parameter that will determine when it will print out loss statistics. Now, at the very start of this function, I'm initializing my hidden state. At first, this is going to be nothing, and it will default to a hidden state of all zeros. Then let's take a look at our batch loop. Now, this is a little unconventional, but I'm just generating data on the fly here according to how many steps we'll train for. So in these lines, I'm just generating a sequence of 20 sine wave values at a time, as we saw when I generated data at the start. Here I'm getting my input x and a target y that's just shifted by one time step in the future. Here I'm converting this data into tensors, unsqueezing the first dimension of our x tensor to give it a batch size of 1. Then I can pass my input tensor into my RNN model. So this is taking in my x input tensor and my initial hidden state at first, and it produces a predicted output and a new hidden state. And next is an important part. I want to feed this new hidden state into the RNN as input at the next time step when we loop around once more. And so I'm just copying the values from this produced hidden state into a new variable. This essentially detaches the hidden state from its history, and I will not have to backpropagate through a series of accumulated hidden states. So this is what's going to be passed as input to the RNN at the next time step, our next point in our sequence. So then I have the usual training commands. I zero out any accumulated gradients, calculate the loss, and perform a backpropagation and optimization step. And down here, I have some code to print out the loss and show what our input and predicted outputs are. Finally, this function returns a trained RNN, which will be useful if you want to save a model, for example. So let's run this code. I'll choose to train our RNN that we defined above for 75 steps, and I'll print out the result every 15 steps. We can see the mean squared error loss here, and the difference between our red input and our blue output values. Recall that we want the blue output values to be one time step in the future when compared to the red ones, so it starts out pretty incorrect. Then we can see the loss decreases quite a lot after the first 15 steps, and our blue line is getting closer to our red one. And as we train, the blue predicted line gets closer to what we know our target is. At the end of 75 steps, our loss is pretty low, and our blue line looks very similar to what we know our output should be. If we look at the same time step for a red input dot and a blue input dot, we should see that the blue input is one time step shifted in the future, and it's pretty close. You could imagine getting even better performance after training for more steps, or if you wanted to add more layers to your RNN. So in this video, I wanted to demonstrate the basic structure of a simple RNN and show you how to keep track of the hidden state and represent memory over time as you train. You could imagine doing something very similar with data about world temperature or stock prices, which are a little bit more complicated than this, but it would be really interesting to see if you could predict the future given that kind of data. Okay, so this was just an example. You can check out this code in our program GitHub, which is linked below. And I encourage you to play around with these model parameters until you have a good handle on the dimensions of an RNN input and output, and how hyperparameters might change how this model trains. Next, Matt and I will go over an exercise in generating text. यहाँ पे यही था क्या, ये तो एमनेस्ट ट्रेनिंग का हाँ, यहाँ पे वो क्या बोल रही थी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी.
सो ये n नंबर ऑफ स्टेप्स है, और हर एक स्टेप में तुमने 20 पॉइंट का साइन वेव का डेटा, जो वन डेटा पॉइंट मिसमैच वाला ये किया, और वो तुमने एक बैच मान के RNN को दिया, जो उसने प्रेडिक्ट किया कि क्या होना चाहिए। है ना? और फिर उसने हिडन स्टेट दी, जो कि उस हिडन स्टेट से तुमने डेटा डाल के वापस हिडन में डाला, और वो हिडन क्योंकि फिर नेक्स्ट इसमें इसका ये बनेगा, तो वो उसकी मेमोरी बनी, ऐसा क्या? क्योंकि अगर वो हिडन नन नहीं है तो तुम्हें HX तुम ऊपर ऊपर से नहीं करोगे, और HX में जो तुम्हारी, so this is just RNN ना, हाँ ठीक है, then it probably makes sense, this is not LSTM right, and इसलिए वो HX नए वाले में आया तो वो HT-1 के लिए वही लेगा और खुद के लिए बनाएगा। So if this is not LSTM, so all you are saying is कि ये मेरा जो आउटपुट निकला वो मेरा आउटपुट भी है और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे है, मैं ऐसे है कि मैं उसी को हिडन लेयर बोलूँगा, और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए वो हिडन लेयर एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट करके उसको पास करूँगा अलोंग विद द न्यू डेटा पॉइंट्स। तो न्यू डेटा पॉइंट के साथ, सिर्फ न्यू डेटा पॉइंट के साथ मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, न्यू डेटा पॉइंट प्लस लास्ट हिडन स्टेट, जो कि मैंने ऐसे कहा उसका, ठीक है, आई थिंक दैट्स द रफ आइडिया। So that's why saying this is representing memory, make a new variable for hidden and detach the hidden state from its history. This way we don't back propagate to the entire history. We don't back propagate. Optimizer जो था वो किस पे लगाया था, RNN के पैरामीटर्स पे, बिकॉज RNN के पैरामीटर्स में हिडन भी है, make a new variable for hidden, okay, so this is a new variable, तो उसमें हमेशा उतना ही डेटा रहेगा जो लास्ट इससे आया, और जब मैं बैक प्रोपेगेट करूँगा इसमें तो मैं ओवरराइट कर रहा हूँ उसको लास्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, आई थिंक वी आर पास्ट आर दिस एनीवे, होपफुली विल कंप्लीट दिस टुमारो, क्या बोलता है? हाँ, आई थिंक वी कैन डू दैट। आई मीन मेरे को द लास्ट कोड वाला पार्ट मेरे को समझ नहीं आया है, was stepped away for a couple of seconds also। तो ये एक बार इसका लिंक मेरे को भेज दे, कौन सा स्पेसिफिक ये है कोड स्निपेट। ये वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क करके गिटहब है ना उसका तेरे पास? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क करके ही है उसका। ठीक है, कूल है, देखता हूँ मैं। नेम आई थिंक जिसका लेसन का नाम है वही नाम है उसका फोल्डर का, ओके, राइट? ऑलराइट, गुड नाइट है।